As a part of the Atlantic Growth Strategy, Canadian government announced the Atlantic Immigration Pilot Program or the AIPP in 2017. इस पायलट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एंड रिटेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू वर्क इन 4 अटलांटिक प्रोविंसेस, जिसमें इंक्लूडेड है नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू ब्रंसविक एंड न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। द गुड न्यूज इज दैट ये प्रोग्राम, जो कि एज अ पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, हैज नाउ बीन मेड परमानेंट। ये प्रोग्राम ओपन है फॉर बोथ इंटरनेशनल वर्कर्स एंड ग्रेजुएट्स फ्रॉम अटलांटिक इंस्टीट्यूशंस एंड एप्लीकेंट्स कैन बी बेस्ड इन कनाडा और ओवरसीज। अगर आप कनाडा में पढ़ना चाहते हैं एंड स्पेशली इन 4 प्रोविंसेस में, यू कैन गेट द कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी इजीली। आइए जानते हैं कैसे। And before we start, it would be great of you to show some love to this video and give us a thumbs up and subscribe to the channel. सबसे पहले बात करते हैं eligibility for overseas workers. For international skilled workers, you will need 1 year of experience in relevant field with either a 1-year post-secondary qualification or high school diploma depending on your skill level. To establish equivalency to Canadian qualification, Education Credential Assessment or ECA is also required. English level expected should be CLB 4 or 5. इसके अलावा settlement funds ranging between $3,000 to $8,000 will be need to shown depending on the number of dependent family members. Eligibility requirement for Atlantic institutions graduates vary. For graduates from Atlantic institutions, you will need a minimum of 2 years post-secondary qualification from colleges and universities located in these 4 provinces. इस category में there is no work experience required. Next important criteria is your job offer requirements. So you should also have a job offer from a designated Atlantic employer. Once you have all the documents in place which I have discussed above, आपको चाहिए होगा एक settlement plan that is easily available with several settlement service provider organizations in Canada. उसके बाद the respective provincial government will endorse your plan and then you can file your temporary work permit application. Work permit मिलने पर you have to apply for the PR within 90 days. So exactly how much time this whole process will take and what is the fee for it? इस process की fee is around 1325 Canadian dollars or 80,000 rupees and it will take around 12 months to process your file including your PR application. मैंने इस प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है फ्रॉम विच यू कैन गेट मोर डिटेल्ड इन्फो ऑन द सेम। कनाडा की ये 4 प्रोविंसेस आर सीइंग अ मैसिव बूम इन देयर इकोनॉमीज एंड यहाँ की यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर रेप्यूटेड एज वेल एज मोर अफोर्डेबल दैन द अदर प्रोविंसेस। इफ यू वांट टू स्टडी एंड लिव इन अटलांटिक कनाडा, द टाइम इज जस्ट राइट. Want to check out other provinces as well? Or maybe you want to know more about Canada's plans to welcome 1.3 million immigrants in the next 3 years? Watch this video, I'd recommend.